सो हफीज साहब, क्या अपडेट है पाकिस्तान से? कुछ हमें इस बारे में बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हो रहा है। Well, Pakistan has a political impasse right now uh, because the Imran Khan question remains unresolved. तो उसकी वजह से मुल्क में अनसर्टेनिटी बड़ी हो गई है और चलती चली जा रही है। और इस इशू की रेजोल्यूशन की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हमने आगे बढ़ना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होनी है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस होनी है, टेररिज्म को एड्रेस करना है, फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस को एड्रेस करना है, तो ज़रूरी है कि हम अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी एड्रेस करें। और उसमें मेन इशू इस वक्त इमरान खान ही है। और उनकी जो इनकारसरेशन है, उनकी जो इम्प्रिजनमेंट है, जो बेसिकली ये करती है ना सिस्टम के अंदर कि आप एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को डिसइनफ्रेंचाइज कर देते हैं। वो लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन समझी नहीं जाती। इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस जो हैं वो मोस्टली पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर है ये कि रिग्ड हुए हैं और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती पार्लियामेंट के अंदर। और उसकी वजह से गवर्नेंस के ऊपर बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। सर ये तो देखें, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट वाली जो बात कर रहे हैं आप, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट तो शुरू से ही पाकिस्तान में हमेशा से हुई है। 71 में आपने डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ही तो की थी। जी हाँ, और उससे ये होता है कि आपकी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है ना, दैट इज that stagnates. It doesn't move forward in at a normal pace क्योंकि hiccups होते रहते हैं रास्ते में. There are always issues that come up between the provinces, between the civilian leadership and the establishment or the army generals, and you have seen that over the years. उससे ये होता है, मैं आपको बताता हूँ कि वी हैव हैड फेजेस वेयर वी हैड डिक्टेटरशिप्स जिसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हैज बीन हायर versus the civilian governments, but that could not be sustained. It can't be sustained because institutions develop नहीं होते हैं और इकोनॉमी हिकअप्स में आ जाती है और इट्स फिट्स एंड स्टार्ट्स में चलती है। मीनिंग के ग्रोथ का फेज आता है, फिर इमीडिएटली बस्ट का फेज भी आ जाता है। अब आप इस तरह देखें कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस के ऊपर डॉलर कोई 30 सेंट्स होता था। अब आप देखें कहाँ है पाकिस्तान इन टर्म्स सर ऑफ द डॉलर एक्सचेंज ये रेट। क्यों हो रहा है सर इस वक्त? इस वक्त यही हो रहा है कि भाई पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, इट इज नॉट competitive enough in the international markets. That's why we our economy stagnates। और हमारा जो डेट बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारा टोटल डेट बर्डन इस वक्त $250 बिलियन है, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल सर इसमें कितना है? एक्सटर्नल कोई 131 बिलियन दैट इज स्टिल अ लॉट। है। इट इज अ ह्यूज अमाउंट। और हमारी इकोनॉमी का साइज जो है वो सिर्फ 400 बिलियन है। या तो 400 बिलियन, तो इट इज अ वेरी सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड इट ड्रैग्स इट डाउन, क्योंकि इस साल की रीपेमेंट्स जो आएंगी 24-25 की रीपेमेंट्स आर 23 बिलियन, and we are unable to repay that because we have to continuously roll over our loans. या And the reason for that is कि भाई investors are unwilling to come and invest in Pakistan. हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो चलती नहीं है इसी वजह से कि हमारे यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं होती
और डायरेक्शन आती है इंस्टीट्यूशंस के साथ। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज और जो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है उसको एक तरह का एग्रीमेंट कर लें कि फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी आर अनटचेबल, एसेंशली उनको उसके ऊपर जनरल एग्रीमेंट हो जाए कि भाई उनको आप 10 to 25 ईयर्स तक आगे देखें विदाउट डिस्टर्बिंग। ये नहीं हो कि भाई एक गवर्नमेंट आती है, वो टिंकर करती है दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी, द प्रीवियस गवर्नमेंट, एंड यू हैव हैड दिस ऑल द टाइम। भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन हर्ट, लेकिन फिर बात उससे ये हुई थी कि दी अयूब खान इरा, it left a lot of it had development, but it led to a situation where East Pakistan left the federation. Bangladesh was created because the fact is that they felt that they didn't get in the adequate part of the resources of the country. That essentially West Pakistan, particularly Punjab, had a major share of the resources of the country, and they were exploiting East Pakistan. So that was essentially one thing, but there were political issues as well, because their representation was because of their population size and the number of seats, the Awami League should really have been running the government. Anyway, I don't want to go too far into history. So this is my final summation on this is that we should try to resolve the Imran Khan issue. I think there should be flexibility on both sides, and that we move forward in somewhat of a unified way, which can put us back on a sustainable growth path, both economically, politically, and obviously that helps to grow socially as well. सर ये अभी कुछ दिन पहले इमरान खान की बेल हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, एंड देन थिंग्स वर लुकिंग ब्राइट कि थोड़ा सा हालात में बेहतरी आ रही है, माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, हिल कम आउट। लेकिन क्या हो रहा है सर, कुछ उसमें कोई उसमें बेहतरी आई है, कुछ नज़र आ रहा है कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग या नहीं? जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें तो ये है कि देर इज नो प्रोग्रेस देयर एट ऑल, क्योंकि देर इज सच अ लैक ऑफ ट्रस्ट। एसेंशली the power resides in Field Marshal Asim Munir and the generals, as usual, जो होता है पाकिस्तान में, in the hybrid regime that we have. And the civilian setup is beholden. They depend on the establishment to survive, क्योंकि they themselves don't have an electoral base at the moment. Nawaz Sharif and the PPP, they had certainly a big electoral base, but that right now, it seems like Imran Khan is still very popular. His party is the largest political party in Pakistan in terms of representation, which has not been recognized. या या उनको इलेक्शन में उनके जो मैंडेट था वो नहीं मिला। Correct. या या सर ये जो डॉलर की आपने रेफरेंस दिया कि डॉलर कुछ दिन पहले कम था, अब वो ज़्यादा हो गया, व्हाई इज इट हैपनिंग? Well, that is a reflection by market forces determine the value of the dollar versus the rupee. अब अगर आपकी इकोनॉमी बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन हो कि that also is has got some level of macro economic stability कि थोड़ी बहुत अब आई है because of these IMF programs. But what the IMF does, these programs do, is कि वो डिमांड को खत्म कर देते हैं. Essentially, what they do is they squeeze the economy in such a way where you have good fundamentals on the macroeconomic front, but you don't have the same in terms of the economy where people are have good incomes, they have good opportunities, and and then they spend their money, and the economic cycle runs instead of these force-fed economic policies of the IMF. ये डिमांड को कैसे स्क्वीज करते हैं? टैक्सेस लगाते हैं? दे टैक्सेस, एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं अभी भी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। 11.5% है. दैट्स ठीक है। वेरी हाई बिकॉज यू बिजनेसमैन बोरो टू ग्रो या टू या इन्वेस्ट इन बिजनेसेस. या तो ये एक चीज है. दूसरी चीज वो ये करते हैं कि टैक्सेशन को हाई रखते हैं, और उससे डिमांड और स्क्वीज होती है.
लेकिन बहुत सी चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व बट IMF is a medicine and final medicine for the economy, so it doesn't go into default. Essentially तो ये है ना कि भाई default scenario को खत्म करना है, तो you have to protect yourself, so you can't go out and open up the economy to investment through lower taxes, lower interest rates and so on. तो उसकी वजह से डिमांड जो है डैम्पेंड रहती है और उसमें वक्त लगता है उसको वापस लाने में. Or because of the IMF programs, a lot of the programs that the government wants to do to spur the economy forward are not possible. हम्म। सर ये फ्लड की वजह से तो बहुत नुकसान हुआ है, इसका क्या इफेक्ट होगा इन द लॉन्ग रन? ह्यूज इफेक्ट हो सकता है. मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था एंड वी शुड बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस, क्योंकि स्टेट बैंक की कोई फोरकास्ट मैंने देखी थी कोई 2 हफ्ते पहले, बिफोर जस्ट बिफोर द फ्लड्स, के ग्रोथ जो है नेक्स्ट ईयर कोई 3% to 4% होगी. अब सीनियर इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं आफ्टर द फ्लड्स कि देयर विल बी पोटेंशियली नेगेटिव ग्रोथ और जीरो ग्रोथ. तो नेक्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट होगी, भाई आपकी एग्रीकल्चर हैज बीन डेसिमेटेड बाय द फ्लड्स, आपको पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, तो काफी डिस्ट्रप्शन हुई. और अभी तक तो ये सिंध में नहीं पहुंचा है, वहां भी या पहुंचेगा. अभी तो और पहुंचाएगा। पाकिस्तान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेड बास्केट है वो तो पंजाब है, आपको पता है, और सिंध भी है. जी सो जी। इफ दोज आर अफेक्टेड तो हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी बहुत सी चीजें, एंड फॉर दैट यू नीड डॉलर्स. एसेंशियली अगर आपको इंपोर्ट करनी पड़ा फूड फॉर इंस्टेंस, तो उससे तो और भी डिस्ट्रप्शन होगा. सो वी आर लुकिंग इन फॉर अ हार्ड विंटर एंड अ वेरी हार्ड नेक्स्ट ईयर। We are very much expect that, and then and to make things worse, next year additional floods are expected because of the rain forecast. The climate change is a very crucial issue around the world, and we have to be prepared for that. Unfortunately, Pakistan hasn't done major planning in that respect. It's not just dams. Dams are a huge political issue in Pakistan. The smaller provinces don't want dams and so on. उनको कहते हैं डिसरप्शन होती है हमें. तो the fact is कि और चीजें करनी चाहिए. We have to look at things like water storage. We have to look at other ways to control this, because you can't control the climate. या या बिल्कुल इसी तरह। सर इसके अंदर जो अभी फ्लड्स आ रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो मैं स्टडी कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी एक रिपोर्ट थी, डॉन के अंदर भी आया कि वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ एसेंशली वेपनाइजिंग ऑफ वाटर बाय इंडिया, क्योंकि इंडिया ने जो हमें फ्लड वार्निंग्स दी, एक तो चले उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, तो उसको तो उन्होंने फॉलो ही नहीं किया, इंडस वाटर कमीशन को तो उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल फॉरेन ऑफिस के थ्रू बताया, एंड देन दे डिड नॉट शेयर the amount of water that was coming in and the timing of the water, when the floods were supposed to hit. So is there any like anything about that? No, absolutely. Kyunki, the thing is that climate change, the weaponization of water, is going to be Pakistan's significant challenge in the next 25-50 years. तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. अब इंडिया ने नहीं बताया, मैंने बहुत सी रिपोर्ट्स इस पे देखी फ्रॉम Hmm. पाकिस्तानी experts who have said that no, they did tell us, they didn't go through the IWT because they have put that in abeyance. India has put that in abeyance. But what they said was that we had warning, but the fact is that the waters, the rains and the waters were so they have Yeah, devastated Indian Punjab as well. yeah, So true, true, that's true. they had to do what they had to do in terms of that, and they did give you notice. So I don't think we should just blame the Indians for this. But I tell you, if this continues, this can get worse and worse, and you can think that it is weaponization, but it will have a major effect on Pakistan every time this happens, Hmm. unless you're बस better prepared. या या सर, और जब आपके फॉर एग्जांपल लेट से अब आप कह रहे हैं कि अगले साल डी ग्रोथ होगी, नेगेटिव ग्रोथ होगी, राइट, इसका मतलब है कि Mm. आपका जीडीपी बढ़ने के बजाय 400 बिलियन से ऊपर जाने के बजाय 400 बिलियन से कम हो जाएगा, राइट?
तो अगर आपकी नेगेटिव ग्रोथ है, आपका जीडीपी नहीं बढ़ रहा, तो उसका मतलब तो ये है कि फिर जो आपका एंड देन अगेन प्रोविंसेस के अंदर नुकसान हुआ है, कि पीके में नुकसान हुआ है, कि पीके में टेररिज्म हो रही है, सिंध में नुकसान होगा, बलूचिस्तान में लादा, पंजाब में लादा। तो वो जो फेडरल और प्रोविंशियल प्रोविंशियल का जो रिलेशनशिप है, जिसके अंदर उन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन को भी तश्कील दी है 11th, ताकि एक नया फार्मूला डिसाइड हो, उसमें भी फिर टेंशन क्रिएट होगी। डेफिनेटली ये जो पाकिस्तान की इशू रहा है ना कंसिस्टेंटली उसे is that there has been constant concern by the smaller provinces कि भाई पंजाब उनको exploit कर रहा है particularly after 1971 और ये जो एक healthy चीज हुई थी ये the 18th amendment लेकिन अब जो है सिचुएशन ऐसी हो गई है क्योंकि यू हैव अ बर्डन पोटेंशियल burden of climate change. I mean, that is a huge burden that you have to address. And who addresses it is the big question. क्योंकि ये तो provincial responsibility है ना. That's why money has been given to the provinces. More money has been given to the provinces. So they have to invest in this. And secondary thing is that because of the issues with India, and the fact is India's aggressive posture, we need more money for defense. So we may have to change the allocation. Right now, the allocation is the way it is, but you need to, the federal government wants to keep more of the tax dollars. And हम्म। then the fact of the matter is that tax collection is not equitable. वो सब लोगों को एक तरह ट्रीट नहीं करता तो ये कुछ लोग जो हैं वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान में जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं दे एंजॉय बेनिफिट्स अभी भी विद इन द टैक्स सिस्टम हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है हम टैक्स कलेक्शन हमारी अभी भी इज नॉट इक्विटेबल बट मोर ओवर के मोर पीपल नीड टू पे देयर टैक्सेस सारी दुनिया के अंदर यू आर लुकिंग एट 19% of GDP. In bigger countries, at least 16% तो होना चाहिए, but 9% of GDP या tax बहुत कम है collection. हमारा। It is very low, and you cannot run a country Pakistan size this way. So the point I'm trying to make is that you need a proper tax collection system. You need the economy to grow, and secondly, you need to have the economy go 3 or 4 times the growth in population. Pakistan's population is growing at 2.5%, and Pakistan's economy has been growing under that. So how do you make for future generations? How do you create employment? How do you bring, employment is a huge issue. That's why many people leave Pakistan because there's nothing at home. Yes, they send back tax dollars. They send back remittances. उससे पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है लेकिन कल जहां वो गए हैं अगर वहां सिचुएशन चेंज होती है if remittances are affected how do you address that so you need a better economy to sustain all that or you definitely have to work on ways to reduce your population growth. फिर मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा एंड देन विल सम दिस अप। इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन को लेके भी कुछ बातें चल रही हैं, व्हाट आर दोज? वेल जहां तक मैंने देखा है वो जो आर्मी एक्ट पास हुआ था अमेंडमेंट जो पास हुआ था लास्ट ईयर it allows for the service chiefs to have a 5-year term versus a 3-year term. Okay. ओके। So that means that there is no notification needed. There's a lot of confusion out there. There's no notification needed till 2027. But after that, if he's interested in a second term after that, a second 5-year term, because the service chiefs, like the Air Force chief, is in his 5th year. So essentially fourth, 5th year. So right now there is no issue as far as the extension to 2027, which will make it 5 years, this present term. But what happens after that? And the thing is, you have to be very careful. There'll be the army brass will be very restive. You are not having, a transfer of power. Younger generals are interested, obviously, in the top job because they deserve it. Essentially, you या can't या continue with the same person. So if you are trying to again manufacture a system like you have, Pakistanis ask, people, foreigners ask me a lot,
why doesn't, if Pakistan has all these issues, why don't the Pakistani people rise up? Why don't Mm, we have an Arab Spring, especially mm, with a democracy next door like India? Even yeah. though it's an illiberal democracy, but that's beside the point. They have had civilian supremacy, they have had civilian prime ministers, and so on. And we were part of India at one stage, but Pakistan has democracy has never taken root because we've had all these military interventions. My point is this: finally, is that whatever the extension period is, the first army chief should retire in the first term. They should not be allowed to continue. A civilian government should not allow army chiefs to continue into a second term or third term because that stunts the system. ये तो आपको क्या लगता है ये लोग इनको एक्सटेंशन नहीं देंगे शहबाज शरीफ देंगे इनको ना नहीं नहीं मैंने आपसे जैसे कहा ना कि he is good maybe probably for 2 more years. Okay. After that, I don't think he should get an extension. But then, if he's insistent on staying, then Yeah. they'll have to have a mechanism whereby the power transfers to another army chief in the army, Yeah. in the hierarchy. But what happens then is he will be weakened, Asim Munir. Yeah. This is what happened to Musharraf. Yeah. He was kicked out by Kiani when he changed, basically he got rid of his second skin, which was, he used to say, was my army uniform. Yeah. And the day he got rid of it, he was weakened. Yeah. So this Yeah. is this is the problem in these hybrid systems, in this unnatural systems. That's why you need a proper democracy, a civilian democracy. Mm. Mm. Thank you, Hafiz Saab. It was nice talking to you again. I'll have you again to give us, like more updates and more roundups of Pakistan's economy and politics. Thank Have you, a Uzair. good, yeah.